Welcome back, students. Today is the session number 2 from the chapter of work, power, and energy. And the topic which I have taken today is the work done by variable force. So, as we all know that the constant force is very, very rare, and normally we encounter the variable forces. So, यहाँ पर I have plotted a figure in which I have shown this variable force in one dimension. If Fx is the variable force and this is the displacement of an object due to the application of this variable force. Xi जो है, this is the initial position of the object, and Xf is the final position of an object. So in this case, the displacement of the object will be equal to Xf minus Xi. तो displacement मेरा हो जाता है Xf minus Xi. Now if the displacement is very, very small, say it is delta x, अगर displacement बहुत ही छोटा है, let us say delta x, then the work done can be written as, we can write that that work done, that is which I have denoted here as delta w, which can be written as Fx delta x. ठीक है, this is when the displacement is very, very small, and in this case I have taken this displacement as delta x. तो delta x जो है वो बहुत ही छोटा सा displacement है, it's very, very small. So यहाँ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये एक शेडेड रीजन बनाया है यहाँ पर. So यहाँ पर जो सॉरी ये है, this one, not this one, ये है, ये आपका this is the displacement है. So दिस वन. सो यहाँ पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, तो ये जो एरिया है ना, ये जो कि मैंने शेडेड किया हुआ है, दिस विल बी गिविंग यू द वर्क डन ड्यू टू द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बाय डेल्टा एक्स. तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस कैन बी इक्वल विल बी कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये आपका जो एफ एक्स है ये आपका एक वेरिएबल फोर्स है, और डेल्टा एक्स जो है वो बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है. तो हम इसको वी कैन राइट इट एज एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स. अच्छा, यहाँ पर बिकॉज ये डेल्टा एक्स जो है वो बहुत ही छोटा है, सो देयरफॉर दिस वर्क डन कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स. ठीक है ना. दो इट इज वेरिंग, अभी उस डेल्टा एक्स में भी जो है फोर्स जो है वो आपका वेरी कर ही रहा है, बट बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी, वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट दैट द वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स. नाउ इफ द डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा है, दैट इज इट इज फ्रॉम एक्स साइड, this is the initial position of the object and this is the final position of the object. So in that case what I have done is I have broken down this displacement into very, 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 very small displacements, which and each displacement is equal to delta x. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा कि अब since now this is a variable force है, ठीक है, this is a variable force and this entire displacement has been broken down into very, 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 very small displacement, which and each of which is equal to delta x. So in that case we can write this work done can be written as limit, अगर delta t tending towards 0, fx delta x, where delta x, this is where x is equal to xi and here x is equal to xf. ठीक है. And this can be written as in the form of definite integral also, that is xi xf fx dx. यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में इसको तोड़ा है, एंड ईच डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स.
सो एक अगर ये, क्योंकि बिकॉज इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, देन देन ये जो आपका द फोर्स इज वेरिंग, बट बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो अगर मैं एक किसी पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ, तो इसका जो ये लेंथ, ये जो विड्थ है वो तो डेल्टा एक्स हो ही गया, बट इसकी जो ये लेंथ है, ठीक है ना, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स. सो एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बाई डेल्टा एक्स. और अगर हम इसको पूरा, इफ आई जस्ट सम अप ऑल these if I sum up the work done by all these small this displacement, then what will happen, that I will get the total work done, and that total work done can be written as in the form of a definite integral, that is this is xi is the initial position of the object, xf is the final position of the object, and this is equal to fx dx. ठीक है, where fx is the variable force, and in this way we can find the value of the work done in displacing that particular object from xi to xf. यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, और इन अदर वर्ड्स द एरिया अंडर दिस कर्व, अगर मैं ये बात करूँ, इस ये पॉइंट को ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट को बी ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, सो द एरिया, और ये पॉइंट को सी कर दिया, इस पॉइंट को मैंने डी कर दिया. So the area under this curve, that is ABCD. So this is basically representing the total amount of work done in displacing that particular object from xi to xf. ठीक है. So यहाँ पर so in the case of a variable force, the work done is equal to xi xf dx fx dx, where fx is the variable force, xi is the initial position of the object, and xf is the final position of the object, and this can be also calculated by calculating the area under this area bounded by the this curve denoting the variable force fx, and the this 2 points which is giving you the final this initial position and the final position of the object. तो ये जो area under this curve आ रहा है, this is also equal to the work done in displacing that object by a displacement equal to xf minus xi. अच्छा, ये हो गया. So here what we have done is we have basically added up all the work done in displacing that particular object by a very small displacement, that is delta x, over the entire this range of this displacement. ठीक है, इसको हमने हर एक डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में जो भी वर्क डन हुआ है उसको हमने पूरा एड अप किया है, एंड दैट इज given by this definite integral. ठीक है ना. So this was what I just wanted to convey in this session, and in the next session I will be coming up with the another topic of work energy theorem, and thereafter we will be solving few numerical problems in the forthcoming these sessions. So thank you very much for joining this session, and have a nice day.